Okay, once again, good morning, students. So, Kisra and Abhishek have joined. Yes, Kisra, before starting, and Abhishek, before starting the new unit, new chapter, I can say, tell me if you have any doubt in last course, PPT, or anything you have. And Kisra, what about you? If you have any doubt in last unit, last chapter, or anything from the whole subject, I can say the subject named 1135. Have you No, done? sir, Okay. not yet. Well, uh, let me start with the second subject, right? That is named as communication skills in English. This subject, I can say, is in continuation of the previous one. You will find some contents are similar while some are new. And when took the first class, the very first class on 2nd of July, then I discussed about verbal and non-verbal communication and certain other parts of communication. In this subject, this communication skills in English, named as 185, this also have first unit from there only. However, it has some deeper knowledge than that. So we will talk about that only. And in the evening class, uh, by 4 p.m., we will start another section related to that section only, but having different aspects of communication. Right? So let me start with the present one that is in continuation of the previous one. Yes, Kisra, can you see the screen? Yes, sir. And now, Yes, sir. okay. Now you can see the screen, the process of communication. Yes, No, Abhishek. sir. No. English and communication skills. And now, Yes, sir. okay. So, if you can recall, अगर आपको थोड़ा याद हो, in the very first class, we discussed about what is communication, what are the definitions of communication, how we can introduce communication, right? So that was in general sense. In the very first class, I told you that whatever I am covering in that lecture, it will include all syllabi of both the papers. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट हमारी क्लास थी, in that class whatever we covered, right, that was related to your first section, second section, or I can say first paper or the second paper. So we will start from that only. Then we will go to the new one. So if you can recall, we discussed about what is communication and what is the definition of communication, right? So we discussed that communication means interaction of a thought, feeling, or anything we want to share with anyone, right? And there's a purpose behind that, right? And the purpose was what? To to be friend with someone, to have a good relationship with someone, to get a job, right? Or to prove our existence, right? So for there are some of the reasons why one communicate. So according to the need of communication, according to the situation of communication, it has been derived into, it has been classified into certain parts. First, for example, verbal and non-verbal, then formal, informal, right? Personal, professional, vertical, horizontal. We discussed about that. So in that unit, we will discuss these things, but from little.
in a more deeper sense. So today we will cover the types and process of communication, some barriers of communication that were not included in the very first class. Then we will compare written communication with the oral communication. Then what are the types of face-to-face interactions? Then characteristics and conventions of conversation and difference between conversation and other speeches. First of all, if you want to recall how we can define communication, so you will be able to recall that communication is simply the act of transferring information from one place, one person, or a group to another. So this is the basic definition of communication. In your paper, when you will write your paper, when you are asked discuss communication or define communication, then you can write like this. However, you can add from your own answer because a lot of content is available on internet regarding communication. It is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or behavior. So this is a new thing is added. I have taken this sentence from your notes that is available on your e-Gyan course. That it's a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or it may or may not include technical knowledge. Why this point has been added? This point has been added because at present, as I am teaching you and you are learning here, without having the technical knowledge, I won't be able to teach you, and in the same way, you won't be able to start this class, to take this class. So, communication may or may not include technical knowledge. But if we have technical knowledge, then there are better chances to communicate effectively, right? Because if we want to get some information and technical means of communication are not available, then there will be a barrier of communication, the physical barrier. Here are some elements of communication. What are the elements? Communication involves at least two persons, the addresser and the addressee. The topic or the contents of message. We must have something that we want to share. The channel, the medium through which the message travels. For example, letter, telephone, email, and the rest of the other means like that. The code, the language of the message, for example, English, Hindi, French, Urdu, Punjabi, whatever. The message form, the message form means the selection of particular grammar and lexical choices of the message. Means the words we are choosing, the sentence we are choosing, and the way we will communicate, the setting, the social and physical setting. So these are the essential elements of communication. In last class, we discussed about another diagram, and this diagram has been taken from your notes. So it is like that. Types of communication. First, verbal and non-verbal. Then verbal is divided into three parts: oral, written, and visual. Right. So here, this visual is part of non-verbal communication. Now, types of communication. Earlier, we have discussed types of communication, but here, types of communication has been provided on the basis of the need of communication. So, if you want to express something, if you want to judge, if you want to classify communication from the point of view of expression, how it has been expressed, then it is divided into three parts: written, oral, and gestural. Right? uh, Here it is not divided as verbal and non-verbal. Here it is divided, it is classified on the basis of the purpose or need of communication.
So this gestural means non-verbal communication. Anything that we use during having non-verbal communication, that is considered as considered as uh, the category of expression, the way of expression. Then flow, how communication is being done, internal or external. Internal means vertical and horizontal. External means when we communicate in any means out of the context, out of the uh, what can I say situation we are having. For example, we are uh, working in a company. When we are working in a company and when we want to talk to our colleagues, seniors, boss, CEO, or when we are working in a government organization, we want to communicate with our seniors. Then within the organization, when we are talking about, it can be a written communication, it can be oral communication. So that will be called internal communication. But when we want to communicate to a person who doesn't belong to our organization, then it will be considered as external communication. And generally, external communication is having either the written mode or having the technical aspects. For example, हम किसी बाहर के आदमी से बात करते हैं and that person is not before us, वो हमारे सामने नहीं है because that is not part of our organization. Then two things will happen. First, either we will communicate through sending email, sending messages, that is a part of written communication, or we will use phone. So that is part of oral communication. So both internal and external communication are classified, are divided under the category of flow. Then relationship. We have also discussed formal and informal communication. So in that context only, formal and informal are based on the situation. Situation means in personal context or professional context. So we have relationship at both places, at our home, at our workplace. So when we discuss communication from that point of view, from relationship point of view, it can be divided into formal and informal. So this is another picture or a diagram that classifies the process of communication, the sender, encoding, message, channel, receiver, decode. And when decoding is completed successfully, the message is sent to the receiver, sender, in the form of feedback. But at the right side, you can see noise. If noise will be there, noise that means disturbance. Disturbance means barriers. If barriers will be there, it will affect receiving. You can see it will affect receiving. When it will affect receiving means the receiver, decoding will not be possible in the same way as encoding was done. So feedback will be sent, of course it will be sent, but feedback will not be appropriate as the sender supposed to get. Why? Because this is the process. When sender encodes message in which form? In oral form or in written form, right? He has a message in his mind and he or she choose to encode is how he or she will transmit the message, right? Then it will be written or spoken. Then the person who wants to decode, when he or she will decode, if he will having the same set of uh, channel, I can say, same set of knowledge, I can say, only then he will be able what the speaker has sent. For example, there is a written communication, there is a written message, but the receiver is not able to read. Why?
there is use of another language, or the person is illiterate, then it doesn't matter how much the speaker intelligent is, the message will be failed to get the purpose. So the sender first of all must know the level of decoding of the person who is receiver or who is supposed to get that message, right? So only then communication will happen. So this is an important point that the sender must know his receivers. As I'm teaching you, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और I'm using a language, I'm using an example कि मुझे लगता है आपको पता ही नहीं, then communication will not happen. It may happen that you listen to me, आप मुझे सुनोगे, but when I will go for feedback, there will be no response, or response will be inappropriate. Then the purpose of taking the class will fail. Well, here are some macro functions of communication. There are two functions, micro and macro. As a student of commerce, you will study economics, right? And in economics, you will find there is microeconomics and macroeconomics, right? In the same way, macro means external or higher or broader functions of communication. Because whatever we have discussed about internal functions of communication or micro functions of communication, right? So what are the micro functions? Micro functions means when communication have less purpose, short purpose, or personal purpose. But when we go for the professional purpose, communication in a broader sense, then it is called as macro communication. So here are the seven key functions, macro functions of communication. First one is the emotive function. What is emotive function? To communicate the inner states and emotions. For example, oh no. Means when we want to express our feelings and with using one or two words or just a phrase, we express our huge disappointment or happiness, then it is the emotive function. And the example is, for example, we say, oh no, oh my god. So these are the functions. Next one, the directive function. The directive function. It means seeking to affect the behavior of others. For example, close the door, please. When you say close the door, please, if we don't use please, the whole context of communication will change. You say close the door means it is an authoritative position. Senior अपने junior को कह रहा है, बड़ा छोटे को कह रहा है, जाओ दरवाजा बंद करो. But when you say close the door, please, the person may be saying जो बोल रहा है और जो सुन रहा है. But when you say please, the situation is changed. Next one. The fatigue function. What is fatigue function? Opening the channel or checking that message that it is working. हम कोई बात शुरू करते हैं एंड चेक भी करते हैं कम्युनिकेशन इज वर्किंग और नॉट मीन्स हम डायरेक्टली फीडबैक का वेट नहीं करेंगे वी वांट टू सी इट इज वर्किंग और नॉट फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू एंड इन बिटवीन बीच बीच में मैं चेक कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू गेटिंग मी आई एम नॉट आस्किंग कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इट मीन्स आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही नहीं आ रही means communication is happening or not receiver is available or not right so that is the setting function for example hello it is Thomas Cook can you hear me Mr. Gupta means we are not asking you what are you getting from my side just I'm asking are you getting something from my side then the poetic function. What is the poetic function? The particular from chosen is the essence of message.
This refers to the aesthetic function of language. It means how beautifully, how creatively, how aesthetically we are getting something. So when we want to study literature, जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं, it can be poem, it can be story or any other text. It can be biography, autobiography, right? When we want to listen to that, the first point is we must have interest. Second, we must have curiosity. There should be something that is hidden. There should be something that is unexplored. And the third thing is we are able to connect that text, poem, to our mental level. So when these three things will happen, only then we can say the poetic function is happening. Right? So when we read a poem and we start imagining what has been mentioned in the poem, then it is happening. When the poem is over and still we are thinking about the poem, it means it is happening. And after some time, after long time, when we feel something like that and when we recall that poem once again, वो poem एक से एकदम से याद आ जाती है, then it means it is happening. So the poetic function is a real macro function. It is, if not forever, but it is for long time. Next one is the referential function, to carry information. Means when we want to remember something, when we want to recall something, and when we want to preserve something, कोई चीज़ जो हमेशा याद रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. When we read newspaper, there can be different kind of news, but we have a set of uh, interpretation कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, right? Someone is interested in sports, वो बहुत ध्यान से स्पोर्ट्स के पेज पे पढ़ेगा. Someone is interested in local news, तो जो लोकल एडिशन आता है तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. Someone is interested in national news, तो फर्स्ट पे ज़्यादा पढ़ते हैं लोग. But if someone is reading the newspaper from other perspectives, other means that is a student, right? If the newspaper is of English and uh, the student want to improve his English or her English, he or she will try to understand what are the meanings of what are the meanings in a passage, in a paragraph. He or she will try to understand every word, every sentence, right? But if there is another student who is not reading that newspaper from that perspective, but he is reading from in order to increase his or her general awareness. Someone is preparing for a competitive examination, then his purpose will be different. उसका पर्पज अलग होगा. इट डजेंट मैटर उसको कोई वर्ड का मीनिंग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट the happening, the event, उसकी डेट मैटर करती है, right? So the same newspaper have different meaning, multiple meaning according to the person who who is going to read that. So that is the referential function. In one more sense, if someone is reading the newspaper from, for example, you are a business student, commerce student, and you are reading newspaper from that perspective, means what is happening in the economy, right? So you will focus on that section. What is the situation of Sensex? What about the market? What is the rate of gold? What is the uh, situation of selling cars? Right? Which company is increasing? What is the situation of shares? Right? And lastly, if a student is reading the newspaper from uh, a rather core professional point of view, means वो students journalist है, वो journalism का student है. So he or she will focus from the presenting way, the way of presentation of
news in that newspaper, right? If there is a student of art, he or she will, because in a newspaper there can be some cartoons also, so he or she will focus on that cartoon, right? And if there is a politician or a person from uh, uh, electronic media, right? He will start comparing what is the difference between the presentation of news in newspaper and how this news was broadcasting on TV, right? So this is the macro function of communication, right? And it comes under the category of the referential function. So here only to carry information was written, and so I have provided you a lot of examples so that you can write your question in the job perfectly, so that you can gain good knowledge and marks as well. Then the metalinguistic function. If you can recall, in last class I discussed about paralinguistic functions of communication. याद कर सकते हो? याद आया? तीसरा? Are you there? Yes, sir. हमने बात की थी ना पैरालिंग्विस्टिक फंक्शंस की, पिच, टोन, स्ट्रेस, राइट? सो दिस इज द metalinguistic function. Metalinguistic means focusing attention on the code itself. For example, the use of both will or shall is correct in mode. If I say in next class I will tell you, and I say I shall tell you, or I shall tell you. So you will not bother about whether I said will or shall, but you will bother that it is going to happen in the next class, means not in the present class, and that was not discussed in the previous class. So that is the meta-linguistic function. Means while understanding something, we do not bother about the use of particular word, but we go for the sense. So that is the broader section of communication. Because if we will focus on will or shall, if we will focus on is and are, if we will focus on has and have, then we might have corrected the grammatical aspect, but we may uh, we may be not able to grasp the meaning. Why? Because, for example, when we are watching a film, the film देख रहे होते हैं, the film has subtitles, and we are not able to understand the way of communication, the way of speaking. फॉरेन की फिल्म है, उनके एक्सेंट के कारण को समझ नहीं पा रहे हैं, and we are focusing on subtitles. So while watching that kind of film, watching that film and reading the subtitles, you will find after some time it will happen two things. First, you will not continue watching that film because you will think मैं स्क्रीन पर देखूं या सबटाइटल पढूं, राइट? सेकेंडली, अगर वो फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको लगता है मुझे देखनी देखनी है, देन सबटाइटल विल हेल्प यू लाइक ए रेमेडी. आपको लगा नहीं सबटाइटल तो बहुत जरूरी है, ये तो होनी चाहिए, नहीं तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, राइट? सो दैट इज द सिचुएशन. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो कोई चीज़ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, राइट? सो दैट इज द मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन. एक और एग्जांपल देता हूँ. एट प्रेजेंट when we watch when we listen to songs on apps like Spotify, JioSaavn, there is option of lyrics, right? When we click on that option, whatever is being spoken, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी बज रहा है, उसको हम पढ़ नहीं सकते. Why we do that? हम ऐसा क्यों करते हैं? Sometimes हमें कुछ वर्ड सुनाई नहीं देते कि क्या बोला गया. Those words belong to a specific culture. Second thing, when we read that songs, हम सबको पता है कि जो सॉन्ग्स होते हैं, गाने होते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ पोइट्री. सो हम वो पोइट्री भी फील कर सकते हैं.
what is being written, क्या लिखा है. When we listen to a song, जब हम गाने सुनते हैं, in general sense, हम हम देखते हैं कि अगर गाने देख रहे हैं तो who is actor, male actor and female actor, and what is the location. But if you are listening to a song, we focus on music, that is soothing or not. And when we close our eyes, we can focus on lyrics. But we hardly try to judge, check who is the lyricist, right? इस गाने को लिखने वाला कौन है, हमें जल्दी नहीं पता होता. एंड हार्डली वी बोदर अबाउट दैट. हाँ, सिंगर का भी पता होता है, जिस सिंगर जानने की कोशिश करते हैं, बट लिरिसिस्ट शायद ही हम जानने की कोशिश करते हैं. क्यों? बिकॉज वी थिंक दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. ये मैंने जरूरी नहीं है कि लिरिसिस्ट कौन है. But why it is important for us that who is the singer? Because we want to listen to other songs from that singer only. If I give my example, there is a singer Satinder Sartaaj. He is a Punjabi singer, right? And when I listen to his songs or I watch his songs, that person belongs to Punjab. He is a Sardar fellow, but he has very good knowledge of English, Persian, and some other foreign language also, like Italian and French. So he has a signature style. In every of his song, he used some word from Persian language. वो पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड यूज करता ही करता है. Right? There are two reasons. दो बातें हैं वो ऐसा क्यों करता है. First, he wants to show that I know Persian language. Second, he wants to show how Persian language, how beautiful Persian language is. Persian language कितनी beautiful है, उसके मीनिंग कितने गहरे हैं. Second, third is that one can go for listening to him. एक आदमी उसको कोई भी लड़का या लड़की उसको इसलिए सुनेगा if that has interest either in Persian language or in that singer particularly. उनको लगता है कि ये जो भी गाएगा, ये जो भी इसका गाना जो हम देखेंगे वो अलग ही होगा. वाई? बिकॉज जैसे मैं बात कर रहा था कि लिरिसिस्ट की हम परवाह नहीं करते हैं, ठीक है. दैट सतिंदर दत्ता इज लिरिसिस्ट आल्सो. इन 99% केसेस वो अपने गाने खुद लिखता है. ही इज ईजली इन इंग्लिश, or I can say not only in English but some sort of translation, and that include Hindi, Urdu, Punjabi, and English. Right? Actually, he was a professor at Punjab University, and he shifted to US for his concert and all that. After that, he left that profession as a full-time profession. I can say teaching. He has taken this. What can I call it? Art only. इसको हम आर्ट कह सकते हैं, आर्टिस्ट हम कह सकते हैं. बिकॉज आर्टिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको हम सिंगर नहीं कह सकते बिकॉज वो केवल गाने नहीं गाता है. हम उसको लिरिसिस्ट नहीं कह सकते बिकॉज वो केवल लिखता नहीं है. ही है ही ऑर्गेनाइजेस सम लाइव शोज आल्सो. कुछ लाइव शो भी वो करता है, उसको हम आर्टिस्ट कह सकते हैं. उसने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, उसने कुछ फिल्में भी बनाई हैं, तो उसको हम एक्टर भी कह सकते हैं. सो ए पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ merits or characteristics, we can call him or her an artist, right? And when an artist affect or leave an impression to the person, one may call him or her master, right? So I can say he is a master in music. So that is the meta-linguistic function of communication. One more example I want to give you. There is a book Chandrakanta. चंद्रकांता एक बुक का नाम है. एंड देयर वाज अ सीरियल व्हेन वी वर स्कूल गोइंग किड्स, एंड देयर वर मैनी पीपल who belong to England, US, or any other country.
When they watched Chandrakanta, they thought they are watching that with English subtitles. In order to understand, in order to feel in original form, they learned Hindi to read Chandrakanta. चंद्रकांता को पढ़ने के लिए उन लोगों ने हिंदी सीखी, right? So that was the meta-linguistic function. Another example I give you, uh, Rabindranath Tagore is the only person from India who got Nobel Prize in Literature. There is a book गीतांजलि, राइट? सो गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. कब मिला? व्हेन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. जब गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और बाहर के लोगों ने उसको पढ़ा, देन उनको लगा वाओ, व्हाट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट, व्हाट्स अ पार्ट ऑफ पोएट्री, राइट? सो देन ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज. एंड व्हेन पीपल uh, came across that person, that poetry, that text, that book has is awarded with Nobel Prize, तो लोगों को उसको पढ़ने की इच्छा और जागती है. और जब लोगों ने इसको इंग्लिश में पढ़ा, then people thought ये ओरिजिनली जो उन्होंने बांग्ला में लिखी है वो कितनी अच्छी है. तो there were a lot of people who learned Bangla just to read गीतांजलि. गीतांजलि को पढ़ना ही उन्होंने बांग्ला सीखी कि उनको फील करें कैसी है, originally कैसी है, right? So that is the meta-linguistic function of communication. Last one is the conceptual function, creating a particular kind of context. For example, right, let us start the meeting. It means we are having communication, हम बात कर रहे हैं, बट बात करते करते हम कहते हैं आओ फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. फॉर्मली स्टार्ट करते हैं मीन्स now everyone is supposed to be formal, everyone is supposed to be attentive, and we must not be casual in any means. That is conceptual function. जब हम कहीं इंटरव्यू देते हैं, uh, every word that we speak, every sentence that we speak is recorded. Recorded, I doesn't mean that I don't mean that it is being recorded from any camera or whatever. No, recorded means the person who are taking your interview, they will focus on that word. They will keep it in record. The record can be oral or written. Means when they will जब किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाता है और दूसरा कैंडिडेट अंदर आता है तो ऑलवेज देयर इज अ गैप इन बिटवीन. वो गैप किस लिए होता है? सो दैट दे कैन पुट देयर कमेंट्स. जो इंटरव्यूअर हैं वो आपस में बात कर सके या अपने पॉइंट्स रिकॉर्ड कर सके, लिख सके. सो एट ए लेटर स्टेज व्हेन द ऑल कैंडिडेट्स हैव बीन इंटरव्यूड, ताकि वो बात कर सके उसके बारे में कि फाइनली हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है. सो दैट इज conceptual function of communication. So I took more time while discussing this macro function because this is an important part of communication. Till now we have discussed certain other parts of communication, but this is for the first time that we are talking about the macro function of communication. So this question may come in your exam. So that's why I invested more time in that explaining that question. Next is barriers to communication. Again, you might think that we have discussed barriers to communication, but the way that has been described in your syllabus, in your notes, so I want to explain them in that context only. Because when you will go through your notes, you will find that whatever I have explained, it will be easy for you to read them, to recall them, and to remember them. Yes, sir. Right? So, in that context, the first barrier is code. हमने बात की चैनल, मैसेज, कोड, मीडियम. So what is code? Code simply means difference in language. Vocab. It may vary according to subject or field.
Very simple. Concept or context. Meaning may vary accordingly. Right? For example, it is raining these days. आजकल बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. Uh, I belong to district Sonipat of Haryana, but I live in Mahendragarh district of Haryana. Right? In my hometown, that is in Sonipat, we are facing a lot of problem. Our fields are filled with water. हर जगह पानी भर गया है. जो फसलें हैं, क्रॉप्स सब डूब गई है. राइट? और वही सिचुएशन है जो दिल्ली में है. बट when I am sitting in Mahendragarh, जैसे मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, it is a desert area. I will not say complete desert, but it is not equal to Sonipat or Delhi. Here, what is the situation? Doesn't matter how much rainfall is happening. कितनी भी बारिश हो जाए, यहाँ मैटर ही नहीं करता. तो यहाँ बाढ़ कभी आ ही नहीं सकती है. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल बिकॉज जो सोइल है यहाँ की, इट इज सैंडी सोइल, रेतीली मिट्टी है. तो और यहाँ जो पानी का लेवल है बहुत नीचे है. सो कितनी भी बारिश हो जाए यहाँ कभी बाढ़ ही नहीं आती. देयर आर सम क्रॉप्स, कुछ ऐसी फसलें हैं जो यहाँ कभी हो ही नहीं सकती. वाई? पानी कम है. जैसे राइस, धान कभी होता ही नहीं यहाँ पे. धान के लिए पानी चाहिए होता है. सो व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स? वहां पे पानी एक्सेस में है, यूज नहीं है, उसका जरूरत ही नहीं है, वो परेशान कर रहा है. हेयर स्टिल यूज दैट. सो द कॉन्टेक्स्ट द कॉन्टेक्स्ट टेल्स द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ समथिंग. ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये डिसाइड करता है कि कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए. राइट? इन द हिली एरियाज, वेरी वर्स्ट सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन है. बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे. बट इफ वी डिस्कस अबाउट दैट डेजर्ट पार्ट्स, राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और भी पानी की जरूरत है, कितना ही पानी आ जाए तो मैटर नहीं करता है. राइट? देन व्हाट वी कैन डू इन दैट सिचुएशन? We can say there should be a system that access can be managed with rareness. So it needs a lot of human effort. It includes some technological part of policy, right? So यहाँ की जो सूखी नदियाँ हैं, अगर उनसे मिला दिया जाए जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, तो दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. But it needs first of all intention, इरादा. Second, a lot of effort, and third one is technology. So जो फर्स्ट है इंटेंशन, तो Sir, हमारा ही रहता है. यस. sir, can you repeat it? फर्स्ट इंटेंशन. जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, मैंने रेनफॉल का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज इट हैपन्स इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारी लाइफ में बार बार ऐसा होता है. कैसे? तीसरा, वंस यू टोल्ड मी दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. What happens with the UPSC aspirants? UPSC aspirants के साथ क्या होता है? Whenever result is declared, जब भी कोई रिजल्ट आता है, it can be pre, mains और final result. So within that particular month, उस एक महीने में वो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. And after some time, they may have less concentrated. तो थोड़ा सा कम फोकस करेंगे. क्यों? बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस. यूपीएससी तैयारी का मतलब है पूरा एक साल पढ़ना. पूरा, हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हमारे एग्जाम होने वाले हैं अब हम पढ़ते हैं. नो, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. एंड हमें आदत पड़ी हुई है. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को समझने का. व्हेन वी आर ए स्कूल स्टूडेंट और व्हेन वी आर स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, we have a tendency, हमारी टेंडेंसी होती है, इट कैन बी यू एंड मी एज वेल, कि वी स्टडी बिफोर डेडलाइन. जब हमें कोई डेडलाइन मिल जाती है तब हम ज़्यादा फोकस करते हैं. मीन्स डेडलाइन कंपेल अस टू फोकस ऑन समथिंग.
पूरा साल हम ऐसे नहीं पढ़ते थे. And I was listening to Mr. Vikas Divekirti, who is I think one of the best coach or trainer I can say. So उसने एक बात बोली कि जिस दिन आप ये सोच के पढ़ोगे कि कल मेरा एग्जाम होने वाला है और रोज ये सोच के पढ़ोगे, देन रिजल्ट विल बी डिफरेंट. तो रिजल्ट अलग ही होगा. हाउएवर इट इज डिफिकल्ट, हालांकि ये मुश्किल है और इसीलिए बच्चे वहाँ पे कोचिंग लेते हैं, इन ऑर्डर टू फील द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज important. And when every day environment is not the same, effort is not same. When everyday efforts are not same, we cannot say the result will be the desired ones. Right? So first one is intention. Second one, intention तो हो गया. Second one, हम कब तक उसको रिटेन करना चाहते हैं. ह्यूमन एफर्ट, हम उसमें कितना एफर्ट लगाना चाहते हैं. राइट. थर्ड वन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अब रेनफॉल इज हैपनिंग, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा. एवरीबडी नोज कि ये एक महीने की प्रॉब्लम है, ये 2 महीने की प्रॉब्लम है. तो हम क्या सोचते हैं कि यार ये एक महीना निकल जाएगा, 2 महीने निकल जाएंगे, फिर तो थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हो ही जाएगी. इट हैपन्स इन एवरी केस. बट अगर वो प्रॉब्लम रोज की हो, देन हम एक ऑल्टरनेट ढूंढेंगे. एंड इफ वी थिंक कि ये हर साल की प्रॉब्लम है, हर साल मीन्स हर रोज की, then we will find an alternate. In the same case, what is why I gave this example कि barriers to communication में बहुत बड़ी चीज है, वो क्या, concept and context. The same teacher may be boring for one student. The same teacher may be very resourceful for some person. Until or unless, जब तक मैं किसी बच्चे को नहीं जानता हूँ कि मेरा स्टूडेंट कौन है, I will not put my efforts in that way. If I think, अगर मैं ये सोचूं कि I have only one student who is listening to me, uh, then it may happen I will feel I will not put my best effort in that. मैं इसमें अपने ऊपर ज़्यादा effort नहीं डालूंगा, एक ही तो स्टूडेंट है. Right? No. But if I feel this is the student, this is the student that will become that person one day. यही वो बच्चा है जो किसी दिन यूपीएससी करने वाला है, आईएएस करने वाला है. सो 100 बच्चों को पढ़ाना, उनमें से एक बच्चा निकलेगा और एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं वही कुछ करने वाले. सो इट डिपेंड्स अपॉन concept and context. Right? When we say a group of super 30, group of super 100, so what is that super 30, super 100? Means the students are focused, the teacher is focused, then the outcome comes. This is the reason. When groups are smaller, the focus is higher. Right? So the meaning of communication may vary accordingly. It depends on the person. Then background knowledge and assumption shared. This is in continuation of context only. ये इसी का part है. Background knowledge and assumption shared. Everybody has some background knowledge. हर किसी को कोई ना कोई knowledge होती है. Right? हर चीज के बारे में जब हम कुछ शुरू करते हैं, we have some knowledge. And due to the टेक्नोलॉजी का ना वो टाइम आ गया है कि सबको नॉलेज हो. एवरीबडी वांट टू गेन सम नॉलेज एंड ही और शी मैनेजेस टू गेट नॉलेज. कोई पूछ के, कोई फोन से, कोई पढ़ के बैकग्राउंड नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं. बट जैसे हमें किसी का नॉलेज होता है तो एक चीज शुरू हो जाती है, वो हो जाती है असम्पशन. हम कुछ असम्पशंस बनाने लगते हैं कि हमने पढ़ रखा है, इसमें ऐसे ही होता है. जैसे ही आपने ये टॉपिक, मैंने टॉपिक शुरू किया कम्युनिकेशन, एंड यू वाज हैविंग बैकग्राउंड नॉलेज, आपको इसका बैकग्राउंड नॉलेज है कि हाँ हमने बात की तो थी कम्युनिकेशन पे, तो आपने एक assumption बना दी, अच्छा आज की क्लास में भी यही पढ़ती. राइट? सो व्हेन दिस थिंग कम, जब ये चीज आ गई, द कंसेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट चेंज्ड. कंसेप्ट और कॉन्टेक्स्ट दोनों चेंज हो गए. सो आई कैन फील कि
जब तक क्लास चलेगी तो आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जो एक नए टॉपिक को लेके हो सकता है। But if you feel that a teacher is teaching for 2 hours and the topic is same, how he or she can repeat the same things, right? And why he or she will repeat? Because it is the same monotonous for you and the teacher as well. So when you will keep your assumptions aside, जो अपनी जो assumptions है आपके उनको आप साइड रख के और सोचो कि नहीं यार, लेट अस लिसन, कुछ सुनते हैं, हो सकता है कुछ इंटरेस्टिंग हो, देन कॉन्टेक्स्ट इज चेंज, फिर मीनिंग बदल जाए, राइट? So this is these two things: concept, context, and background knowledge and solution. These are very important points, very essential points. And here barrier arises, और यहीं पे barrier शुरू होता है, यहीं पे. Why? Again, I give example. किसरा कभी आपने विकास दिव्य कीर्ति सर को सुना है? Yes, yes, sir. उनकी क्या खास बात है, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है अगर अच्छा लगता है तो? Sir, he always used to motivate us. ओनली मोटिवेट? No, sir, और वो उसका फनी है थोड़े. फनी है? तो आपने कभी खान सर पटना को सुना है? Yes, sir. हाँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? Mm, सर मैं ज्यादा नहीं सुनती खान नहीं सर नहीं, आई की. एम आस्किंग, इफ यू हैव सीन अ सिंगल वीडियो, आपने एक ही देखा है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस क्लास दैट यू लिसन टू विकास दिव्य कीर्ति और खान सर पटना, नो नो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दैट क्लास. आई एम जस्ट आस्किंग. अगर आप मुझे कहते कि सर आई वांट टू बिकम ए सीए आफ्टर डूइंग बीकॉम, आई वुड हैव नेवर डिस्कस्ड about विकास दिव्य कीर्ति sir. Yes, Then sir. I would discuss some other persons, Yes, sir. right? Yes, sir. Got हाँ, it. अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? बिकॉज जो खान सर हैं, ही यूजेस सम रस्टिक वर्ड्स, कुछ देसी वर्ड वो यूज करते हैं, Yes, और sir. वो लोगों को हंसाने की बात करते हैं, और वो अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में बात करते हैं, और बच्चे उनको बहुत सुनते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, Yes. राइट? बट प्रॉब्लम क्या है, और वो यूपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं, कमाल की बात ये है, और उससे लोग बहुत सीखते भी हैं. मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, पहली बार डीजल इंजन पेट्रोल में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने उनके वीडियो से देखा. आई एम आर्ट स्टूडेंट, आर्ट आर्ट टीचर, बट मुझे लगा कि मुझे इसका फंक्शन पता होना चाहिए. मैं एक Yes. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास को पढ़ा रहा था, सो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए. बट व्हेन आई वाज लिसनिंग टू खान सर, तो मेरे माइंड में चीज आई कि इस आदमी ने कभी यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, राइट? Yes. बट वो यूपीएससी की कोचिंग दे रहा है. तो दैट पर्सन मे बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट से, बट कहीं ना कहीं माइंड में एक बात आएगी, एक बैकग्राउंड नॉलेज क्या रहेगा कि ये आदमी बहुत अच्छा पढ़ाता है, बट इसने कभी टेस्ट पास तो नहीं किया है. बट जब हम विकास द्विवेदी सर को सुनते हैं तो हमारे माइंड में बात आती है कि ही इज दैट पर्सन हु वाज सेलेक्टेड एन आईएएस हिंदी मीडियम Yes, में, sir. अपने बैच में वो ऑल इंडिया टॉपर थे. Yes, sir. He was former IS officer. हाँ, और उन्होंने आईएएस क्यों छोड़ी? ताकि वो और आईएएस क्रिएट कर सके. तो माइंड में Yes, एक sir. इमेज बन गई, एक बैकग्राउंड नॉलेज आ गया कि यस, दिस पर्सन हैज समथिंग, राइट? Yes. कि इस आदमी में कोई बात है. तो ये जो बात है, ये जो बैकग्राउंड नॉलेज है, इफ इट इज पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव है तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ. और अगर हम कहें कि नहीं यार, अ, इस जॉब में कुछ भी प्रॉब्लम है जो उस आदमी ने छोड़ दी, तो वी मे बी डिमोटिवेट, हम वहाँ Yes. डिमोटिवेट हो सकते हैं, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम किससे सीख रहे हैं. अगेन आई विल टेल यू, अगर मैं आपका बैकग्राउंड चेक नहीं करता हूँ, मीन्स मुझे नहीं पता चलता कि आप यूपीएससी तैयारी करना चाहते हो, सो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इजी थिंग फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत आसान है. But when I am teaching to the aspirants, to the students of that level who are doing distance learning education and they won't have a regular class,
And after the month of July, we will not meeting virtually, and of course not physically. And at that time, when they will be doing self study, then they might feel that whatever we listened to during that online classes, that was having some meaning. तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ा पाता हूँ जो आपको उस टाइम भी याद रहेगा जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो कुछ बात बनती है, तब पढ़ाने का कुछ फायदा है. सो दिस इज पार्ट ऑफ. अभी हम बात करते हैं मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की, रिटेंशन. राइट, कि कब तक इस चीज को आप रिटेन कर पाते हो. तो अगर मैंने आज पढ़ाया और आप कल भूल गए, तो दोनों में प्रॉब्लम है, मेरे पढ़ाने में भी और आपके पढ़ने में. राइट. So if I will put my effort, and what I mean by effort, by giving you example of that. बिकॉज हम चीज़ों को एग्जाम्पल से याद रखते हैं. चीज़ों को याद रखने में दो तरीके होते हैं, एक कंपैरिजन, दूसरा एग्जाम्पल. हम एक चीज़ को या तो कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं कि ये ऐसा नहीं तो ऐसा है. दूसरा, हम उसकी उसमें एक रीजनिंग ढूंढते हैं. राइट, उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कि इसका ये एग्जाम्पल दिया था, तो ये ऐसा हो सकता है. राइट. लेट अस गो अहेड. नेक्स्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन. इसकी हम बात कर चुके हैं. टोन, एक्सेंट, स्ट्रेस, पोज, सॉरी, पेस. व्हेन वी वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, जब भी हम किसी चीज पे स्ट्रेस डालना चाहते हैं, तो वन थिंग इज नेसेसरी. एक चीज जरूरी है कि वी विल प्रोनाउंस दैट वर्ड करेक्टली, बट इन लेस स्पेस. हम उस चीज को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन स्पीड बिल्कुल नहीं होगी, पेस बिल्कुल नहीं होगी. हम कहेंगे, for example, process. I will say, understand the process. So I'm pronouncing the word process with little pace, less pace. Means I want to focus on that. और जब हम किस चीज़ को जल्दी से बस बोलना चाहते हैं, जैसे कई बार हम कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, there are some words, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम बोलना नहीं चाहते हैं, या some words comes under the category of taboo, तो हम बहुत स्पीडली उनको बोल के निकल जाते हैं, बहुत स्पीडली बोल जाते हैं. मीन्स वी हैव टू स्पीक, हमें बोलना पड़ेगा, बट वी वांट दैट पीपल शुड नॉट फोकस ऑन दैट. Then next one is culture specific words, terms and sayings. Right. तो कल्चर स्पेसिफिक वर्ड एक बहुत बड़ा बैरियर है. राइट. कुछ टर्म्स होती हैं, देन सेइंग्स, कहावतें जिनको हम बोलते हैं. एक कॉमन एग्जांपल चला रहा है बचपन से ही, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड आई फाउंड दैट इट इज अ रॉन्ग एग्जांपल. नो, इट नेवर हैपेंस. फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर लास्ट इंप्रेशन. बट बैरियर से कम्युनिकेशन, हम ऐसा करते भी हैं. वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं पे जा रहे हैं, वी ट्राई टू प्रिटेंड दैट वी वांट टू अटेंड a wedding. We know this wedding won't happen again, so we want to make our impression as a last impression, at least for that wedding, that people can recall us. Oh, she have wear that, or that person was having that kind of stuff. No. Right. Then next one is physical environment and distance. अभी मैंने बात की आपसे. In the next class, means शाम को जो हमारी क्लास है उसमें बात करेंगे. Then we will understand it, this physical environment, distance in a deeper way, कोई दूसरा context है. Then fear, attitude, trust, lack of attention, ego and beliefs. हमने बात की थी पिछली बार, जब बैरियर की बात कर रहे थे, एडिशनल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर. सो आपके सिलेबस में बैरियर्स को कुछ ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे मैंने आपको बताया. The same way, they are not classified in that kind of categories like physical, environmental, or I can say organizational, but they are discussed as a whole. उनको ऐसे डिस्कस किया गया है. So डर, attitude, trust, lack of tension, ego, belief, right? So these are also uh, key barriers. Now let us do some exercise. Then we can have a break of 5 minutes if you want. Then we will come back to uh, what we are discussing.
So now, in place of that PPT, I want to show you PDF. Yes, Kisra, can you see that PDF? Yes, sir. Yes, Okay, Abhishek is also there. Good, okay. yes, sir. So, yes, word formation. Can you see? Yes, sir. Yes. Okay. So, this exercise is based on all the aspects of grammar we have studied. अब तक जो भी हमने grammar में पढ़ा है, so these are 30 sentences and they are from all the aspects of grammar. जो भी हमने पढ़े अब तक ये सब उन सब का composition है. So let us do it so that we can feel that we have a sense of revision. तो जल्दी से बात करते हैं. You have to understand. आपको खुद से समझना है कि इसको हमने कैसे करना है. There is no clue. राइट, तब हम मान सकते हैं कि हाँ मैं रियली में कुछ सीखा है. सो क्विकली टेल मी व्हाट विल कम इन द फर्स्ट सेंटेंस. A knowledge of foreign languages. हाँ, especially French and German is required for the growth. So when you use the word knowledge, right, so it will come in what category. इसको हम क्या कहेंगे, क्या किया आपने, नो का नॉलेज कर दिया तो क्या हो गया. ओके, जैसे नो एक वर्ब है, नो जानना, नो यू नो, आपने Sir, कहा नॉलेज. adjective. नो 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 नो, नाउन. Oh, sorry, sorry, sorry. राइट, हाँ, Yes, sir. नो नॉलेज. राइट, लास्ट टाइम किया था हमने, भूल गए ना आप. We did an exercise. In that exercise there was verb, adjective, adverb and noun. राइट, सो दैट्स व्हाई आई फाउंड दिस एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से नहीं है, बट आई फाउंड इट. मैंने इसको सर्च किया एंड दैट वाज ए परफेक्ट एग्जांपल टू हैव अ रिवीजन. सेकंड, जल्दी से, जूडो रिक्वायर्स. हाँ जी, अभिषेक, किसका, दोनों जल्दी बताओ बेटा. यस एनीवन. नो आइडिया. No, sir. What is the noun of strong? See, हम, Strength. यस यस, वेरी गुड, स्ट्रेंथ. सी, सबसे पहले जब भी कोई आप वर्ड देखते हो, वेन एवर यू कैम अक्रॉस एनी वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू नो द मीनिंग. उसका मीनिंग देखो, आपको मीनिंग आता है कि नहीं आता है. मीनिंग नहीं आता है तो सेंटेंस की सेंस को समझो.
एक मीनिंग गेस करो फर्स्ट, ध्यान सुनना इस बात को फर्स्ट। सेकंड, इफ यू नो द मीनिंग, आपको मीनिंग पता है, इंस्टेंटली ट्राई टू मेक सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। उसकी फर्स्ट फॉर्म हमारे सामने है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना के देखो, राइट। अगर फॉर्म बन रही है इट मीन्स दैट इज वर्ब, फॉर्म नहीं बन रही है, राइट, ट्राई टू मेक सिंगुलर एंड प्लूरल्स ऑफ दैट, उसका सिंगुलर प्लूरल बना के देखो, बन रहा है इट मीन्स इट कैन बी नाउन, राइट। उसका सिंगुलर और प्लूरल भी नहीं बन रहा है तो इट कैन बी एन एडजेक्टिव, राइट। अगर एडजेक्टिव नहीं है तो कंफर्म है कि वो नाउन नहीं है, फिर वो वर्ब है, राइट। और वर्ब की एडवर्ब होती है। ये चार चीजें अगेन आई वांट टू टेल यू। सबसे पहले तो कोई वर्ड हम सीखते हैं, सिंस यू आर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, अब आपको एक चीज बताऊं डियर, वोकैब बिल्डिंग इतनी आसान चीज नहीं है। एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट ए डे। क्यों कहा गया ऐसा? बिकॉज वोकैब सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इंग्लिश का, मैं अगर मानूं तो। ग्रामर के भी कुछ रूल हैं, ग्रामर के भी कुछ सी व्हाट यू कॉल इट टाइप्स हैं बस, लेकिन वोकैब की कोई टाइप नहीं है, वोकैब की कोई लिमिट ही नहीं है, right? So always try to enhance your vocab. Last time when I finished my PPT तो मैंने आपको एक कोटेशन दिखाई थी, क्या? Don't raise your voice, raise your words. आवाज ऊंची नहीं करनी है, वर्ड्स बढ़ाने हैं। तो ट्राई टू remember as much as words you can. And I want to tell you, it is not part of that particular exercise, but I want to tell you, if you want to increase your vocab, you must feel the need of increasing that vocab. उसकी आपको जरूरत क्यों है वो आपको सीखनी पड़ेगी। आई कैन रिकॉल, मुझे याद है व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, तो आई वाज हैविंग द सेम इशू। इंग्लिश में मुझे लगता था कि मुझे थोड़ी कम आती है, तो माय टीचर टोल्ड मी दैट टेक अ डिक्शनरी। एट दैट टाइम गूगल वाज नॉट एज available as it is for you. I was not having an Android phone or laptop or PC with me. I was having just a feature phone. So we were having the hard copy dictionary, Oxford Advanced Dictionary. तो हम क्या करते हैं? Our teacher told us that study every day, read every day, remember every day 5 new words. रोज के 5 वर्ड सीखो, रोज के 5 वर्ड याद करो डिक्शनरी से और आपकी वोकैब अच्छी हो जाएगी। सो व्हाट वी डिड, वी ओपन दैट डिक्शनरी, हमने फर्स्ट पेज ओपन किया, तो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट बिल्कुल ए के वर्ड्स दिखाए गए, अबैक, एबंडन, अब्यूज। हमने 5 वर्ड सीखे। अब वो हमने वर्ड सीख लिए, हमें पता उनका मीनिंग क्या है, बट व्हेन आई वांट टू कम्युनिकेट, जब मैं बोलना चाह रहा हूँ, लिखना चाह रहा हूँ, आई डोंट नीड दैट वर्ड, मुझे इनकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। मुझे किसी को गाली नहीं देनी है और पहला वर्ड है, थर्ड वर्ड है वहाँ पे अब्यूज। द वेरी फर्स्ट वर्ड इन दैट डिक्शनरी आई स्टिल कैन रिकॉल वाज अबैक। अब मुझे किसी को धक्का ही नहीं देना है, किसी को पीछे धकेलना है, मुझे इसकी बात ही नहीं करनी है, तो मुझे वर्ड वो याद है, राइट। सो दैट आइडिया डिडंट वर्क, उस आइडिया ने काम नहीं किया। देन व्हेन आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, आई वांट टू राइट एन आंसर, और मुझे वहां पे जो वर्ड चाहिए मुझे वो सर्च करना है डिक्शनरी में। सो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग थिंग, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो हम कई बार उस चीज़ को छोड़ देते थे। क्यों? बिकॉज डिक्शनरी में एक वर्ड ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी। हार्ड कॉपी इट वाज हैविंग नियरली 1000 पेजेस, 1000 जो पेज है उनमें से वो वर्ड ढूंढना, ये अपने आप एक्सरसाइज होगी। Now it is very easy, Google Meet से डालते हैं। So you must take advantage of technology। इससे अच्छा टाइम तो कभी हो ही नहीं सकता कि आज हम vocab सीख सकते हैं, राइट। सो जब भी आपको कोई वर्ड देखने को मिले, मैं आपको बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। वेदर यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, यू वांट टू बिकम ए सीए, यू वांट टू बिकम एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, यू वांट टू डू एनीथिंग दैट नीड्स vocab, आपको अगर वहाँ पर vocab की जरूरत पड़ती
है तो एक चीज आप करें, वो क्या, सबसे पहले कोई भी वर्ड आप देखें, राइट, उस वर्ड का मीनिंग देखें। मीनिंग आपको पता है, बहुत बढ़िया। नहीं पता है तो मीनिंग सर्च करें। मीनिंग पता है तो मीनिंग पता चलते ही दूसरा काम क्या करना है, ट्राई टू फाइंड आउट टू सिनोनिम्स एंड टू एंटोनिम्स। उस वर्ड के दो सिनोनिम्स और दो एंटोनिम्स ढूंढो। कई बार उसके आपको सिनोनिम्स नहीं मिलेंगे, कई बार आप उसके एंटोनिम्स नहीं मिलेंगे। इट मे हैपन, राइट। अब पॉइजन एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइजन। अब पॉइजन का सिनोनिम्स हो सकता है फेटल, तो एक पॉइजनस, फेटल, मार देने वाला, राइट। बट पॉइजन का एंटोनिम्स नो पॉसिबल, है ही नहीं, नाउन है, राइट। देन सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसके जस्ट बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब बना के देखो, राइट। एंड इफ फॉर्म ऑफ वर्ब्स आर नॉट अवेलेबल, मींस वो नाउन है। नाउन है तो सिनोनिम एंटोनिम्स देखो उसके, राइट। अगर वर्ब है तो उसके साथ साथ उसके हमें इसकी नाउन फॉर्म तो हमारे पास मिल गई, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, तो वर्ब है तो इसकी एडवर्ब क्या होगी। दैट्स ऑल। इतना अगर हम करते जाएंगे तो यू विल फाइंड आफ्टर सम टाइम योर वोकैब एनहेंसिंग। आपकी जो वोकैब है वो एनहेंस हो रही है, और फील करोगे यू हैव सम न्यू वर्ड्स। एंड आई वांट टू टेल यू, हैवी वोकैब नेवर मेक अ गुड कम्युनिकेटर। अगर आप ऐसे वर्ड ढूंढते हो जो दूसरों के लिए काफ़ी ऑकवर्ड है, तो इससे आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली नहीं है। बिकॉज हमें वर्ड भी ऐसे ढूंढने हैं जिनका मीनिंग समझना पॉसिबल हो। आपने कभी अगर एनडीए एग्जाम दिया तो, आई हैव डिड 2 अटेम्प्ट्स, तो एनडीए में वोकैब बहुत मैटर करती है अपार्ट फ्रॉम मैथ्स। एंड दैट वोकैब इज ऑफ हाईएस्ट लेवल, बहुत अल्टीमेट वोकैब होती है। आप समझ नहीं सकते किस लेवल की वो क्या हो सकती है। सो द स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड, हु हैव did their schooling from a school that is English medium school in true sense, and the teacher has good level of communication skills in English, तब आप समझ सकते हो कि हाँ हमारी वो क्या वहाँ improve हो सकती है। अदरवाइज कितना ही पढ़ लो, इंग्लिश इज हैविंग वर्ड्स फ्रॉम मोर देन 50 लैंग्वेजेस। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें 50 से ज़्यादा भाषाओं के शब्द हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका हम 1% भी सीख सकते हैं, राइट। सो इसलिए एक्सरसाइज में निकाल के लाया हूँ कि एकदम से भी पता चले कि इस वर्ड का भी करना क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, राइट। सो आई विल नॉट कंज्यूम मच टाइम बिकॉज मुझे ये फिनिश भी करना है। सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग, इसका हम स्ट्रेंथ बनाएंगे। थर्ड वन इज वी डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज द प्राइस वाज वेरी, आप इसमें बताओ क्या है, Sir, reasonable. रीजनेबल। व्हाट विल बी द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ रीजन, Uh, reasoned, reasoning. नो, रीजन का वर्ब होगा ही नहीं बेटा, Yes, बिकॉज sir. Yes, sir. क्यों, बिकॉज रीजन नाउन है, Yes. Yes, राइट। sir. और रीजनिंग क्या है, Um, present tense. रीजन इज नाउन एंड व्हाट इज रीजनिंग, Now. एडजेक्टिव डियर, एडजेक्टिव। Yes, sir. एंड व्हाट इज रीजनेबल, Uh, adverb. adverb, very good, yes। What about fourth, the dash of mountain is about 2000 meter high, The height of the mountain. very good। एंड यू कैन सी इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है हाई, आगे, Um, High, higher, highest. height. एक्चुअली इफ, अगेन आई टेल यू, मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ, इफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर नॉट अवेलेबल, अगर किसकी फॉर्म नहीं बन रही है
तो उसकी हायर डिग्री हो सकती है, हाई, हायर, हाईएस्ट। Okay. Yes, sir. राइट, हाँ। नेक्स्ट वन, टी और कॉफी। Twice. सॉरी, टी और Choice. कॉफी, इफ आई, सॉरी, आई, Choice. Choice. If I had the choice, I would take यस, tea. चॉइस, यस, गुड चॉइस। नेक्स्ट वन, She was Ambitious. यस, शी वाज वेरी एम्बिशियस। राइट, देयर इज अनदर वर्ड, एम्बिशन। राइट, so ambition is noun or adjective? Ambition. Noun. And what is ambition? Sorry, uh, ambition, yes. What is, it's a noun. So what will be the adjective of ambition? Ambitious. Ambitious, yes. Why ambitious? Ambitious noun कैसे हुआ? Sorry, adjective कैसे हुआ? Sir, because इसके forms हैं. If someone is ambitious, अगर Yes, कोई sir. ambitious है तो ये उसका एक गुण है। राइट डियर, Yes. इसलिए जो एम्बिशियस है वो एडजेक्टिव हो गया। मैंने आपको बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, दो चीजें हैं, एक काम और एक काम को करने वाला। राइट, जो काम है उस काम को हम वर्ब के थ्रू डिनोट करते हैं, काम को क्रिया के द्वारा हम बताते Yes, sir. हैं। मतलब वो हाँ, ambitious है. हाँ, एम्बिशियस है, तो ये कोई वो वो उसकी काम नहीं कर खासियत रही है. है। नहीं नहीं, वो ये काम नहीं कर रही है। आप सुनो मैं क्या कहना चाह खासियत. रहा हूँ। दो बातें, काम और काम को करने वाला, काम और काम को करने वाला। अब काम करने वाला भी अच्छा और बुरा हो सकता है, और जो काम किया गया है वो भी अच्छा और बुरा हो सकता है। राइट, so when something is good or bad, it means it have merits and demerits, and we have different words to tell the merit and demerit of the work and doer of that work। राइट, काम को जो करने वाला है उसकी विशेषता बताने के लिए अलग वर्ड है। राइट, और जो काम है उसकी विशेषता बताने के लिए अलग वर्ड। तो काम के जो काम करने वाला है उसके जो वर्ड है, उसकी अच्छाई बताने के जो वर्ड है, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो काम किया गया है, जो एक्शन है, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, उसकी जो मेरिट डिवाइड होता है, दैट इज एडवर्ब। ये हमें ध्यान रखना है। और आप जब भी कोई एग्जाम दोगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, ये आपको परेशान करने वाला है। मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई टीच बीटेक स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट्स, बीकॉम स्टूडेंट्स एंड बीए स्टूडेंट्स। और उन व्हेन दे विल अपीयर फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम, जब वो सीजीएल एग्जाम देते हैं, कंबाइंड जेनरल एग्जाम देते हैं, तो सबको, चाहे किसी कोई बैकग्राउंड हो, ये जो ग्रामर वाला सेक्शन है जरूर फेस करना पड़ता है। तो ग्रामर कभी भी रट के याद नहीं हो सकती, जैसे वोकैब याद करते हैं। तो ग्रामर को हमें समझना पड़ेगा कैसे, अकॉर्डिंग टू द नीड, जरूरत के हिसाब से ग्रामर को समझना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस। Yes, sir. हाँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन, यू हैव बीन वेरी Helpful. हेल्पफुल। राइट, हमने हेल्पिंग क्यों नहीं यूज किया? हम कहते हैं ना उसका नेचर काफी हेल्पिंग नेचर है, ही इज हैविंग हेल्पिंग नेचर। तो व्हाई हेल्पफुल, व्हाई नॉट हेल्पिंग? सर, क्योंकि उसकी ये खासियत है कि वो हेल्पफुल है. मतलब उसने हेल्प किया. बट एडजेक्टिव है. हेल्पिंग भी ऐसा होता है बेटा, हेल्पिंग नेचर। सर, बिकॉज काम हो चुका है. कर नहीं रहा है, वो हो चुका है. ओके, अभिषेक, आर यू देयर? Yes, sir. बता सकते हो व्हाई नॉट हेल्पिंग, व्हाई हेल्पफुल?
पता है, मुझे लगता है कि आईएनजी तभी लगता है ना जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है या फिर ऐसे। बट इट इज नॉट ट्रू। इंग्लिश हैज सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ओके। राइट? अगर मैं कहूँ कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं कहूँगा आई एम वर्किंग दिस डेज, मैं इन दिनों काम कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि माई मदर इज वर्किंग, नो शी इज होम मेकर। वर्किंग नहीं है, होम मेकर। राइट? अब ऐसा नहीं वो काम नहीं कर रही है, घर का काम कर रही है। राइट? हम्म। बट वर्किंग, घर से बाहर जॉब नहीं कर रही। राइट? सो इन द हम्म। सेम वे, when we say helpful or helping, right? Helpful यस। means कि एक पर्टिकुलर टाइम बेस पे उसने हेल्प की है, इसलिए हेल्पफुल है। एक टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कि आपने किसी काम को लेके मेरी हेल्प की, जब तक ये काम चला यू वर वेरी हेल्पफुल, कि वेन एवर आई एम इन नीड आपने मेरी हेल्प की, तो आप हेल्पफुल रहे। वो हेल्पफुल इसलिए रहा बिकॉज ही और शी वांट्स टू हेल्प, वो हेल्प करना चाहता था। राइट? क्यों? बिकॉज ही इज हैविंग ए हेल्पिंग नेचर। Yes, समझे? sir. हाँ। Sir, if we use helping here, then it would be wrong or right? यू हैव बीन वेरी हेल्पिंग, उसके साथ में Sir, कुछ और यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द yes, कोर्स sir. ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द वर्क। राइट? हाँ, तो भी कुछ और यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली हेल्पिंग इज ए ब्रॉडर टर्म देन हेल्पफुल। Yes, sir. राइट? मैंने बहुत एग्जाम दिए डियर, आप भी दोगे कल को, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज वर्ड प्ले, यही चीजें उल जाती हैं। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग। जब आप, अभिषेक, यस सर। व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर डूइंग बीकॉम? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी कभी कर सोचा रहे नहीं हैं। है, बट यू आर डूइंग बीकॉम, अभी आप बीकॉम कर रहे हो, अभी तो श्योर हो यस। ना? यस सर। After doing BCom, there are a lot of vacancies in central government as well as state government. आप at the level of graduation, graduation के बेस पे आप बहुत सारे एग्जाम दोगे, हम्म। right? So when यस। you will appear in that exam, you will find that अगर आपका इंग्लिश वाला सेक्शन अच्छा जा रहा है, यस सर। तो आपके चांस रहेंगे कि आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आई एम सेइंग दिस बिकॉज इंग्लिश इज नॉट ओनली बोरिंग फ्रॉम द vocab पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज बोरिंग, इट इज monotonous फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट? यस सर। ग्रामर को लेके ना बच्चे बहुत ज्यादा इससे चिढ़ते हैं। राइट? एंड ग्रामर बहुत बहुत अच्छी चीज नहीं है, मुझे भी बोरिंग लगती है, लेकिन पॉइंट क्या है, बीइंग ए टीचर मुझे उसको ऐसे समझाना पड़ता है कि बच्चों को समझ आए, तो मुझे ही समझ आती है। और मैंने रूल्स कभी याद नहीं किए, मुझे पढ़ा पढ़ा के रूल याद हो गए हैं। तो आपको इसको कैसे याद करना है कि आप इसको डे टू डे कम्युनिकेशन में आपको इसको यूज करना है, देन यू विल कम अक्रॉस। अब जैसे आज के बाद आप हेल्प वर्ड यूज कर रहे हो, आपको आई एम वेरी हेल्पफुल पर्सन, राइट? बिकॉज आई एम हैविंग ए हेल्पिंग नेचर। यस राइट? सर। हाँ, आपको आराम से याद होगा। अगर मैं कहूँ कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश, बता सकते हो? Difference between childlike and childish. सर प्लीज रिपीट। Difference between childish and childlike. चाइल्ड लाइफ। Childlike, CHILD, child, LIK, like. Childlike and childish. Sir, it is very confusing. Very confusing ना? Yes, sir. And suppose आप किसी को बोल दो कि ये आपने कैसे childish काम किया है, तो सामने वाला गुस्सा हो सकता है। Because childish means having a sense of knowledgelessness, जिसको मूर्ख बोलते हैं। अगर किसी ने थोड़ा सा मूर्खता वाला काम किया तो उसको चाइल्डिश बोलते हैं, चाइल्डिश। राइट? और चाइल्ड लाइक, इनोसेंट लाइक ए चाइल्ड। राइट?
अब सपोज करो आई हैव ए किड, आपके बहन भाई होंगे, घर में बच्चे होंगे, आप जब वो बोलते हैं हम उनके साथ क्या करते हैं, तुतला के बोलते हैं, राइट? तो दैट इज चाइल्ड लाइक। Okay, बट sir, got it. बट जब क्लास में बोलते हैं तो चाइल्डिश। Childish. Yes, sir. एक और चीज, हम खाना खाते हैं, हम व्हेन वी आर हैविंग रोटी, हम रोटी खाते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, रोटी के बीच में सब्जी रखते हैं, उसको राउंड करते हैं, रैप करते हैं और खाते हैं, Yes, राइट? sir. तो उसको हम क्या Yes. बोलेंगे, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक? Childlike. चाइल्ड लाइक कब बोलेंगे, जब घर में खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं तो Childish. हाँ। और देखो उसका क्या ट्रेंड आ गया है, एक बहुत सारे रेस्टोरेंट आ गए हैं जो वो रैप देते हैं, एटलीस्ट 100 रुपीज, 150, जो एग वाला है उसके इतने, उसके इतने, है ना? देखो चीजें घूम Mm-hmm. के कहाँ पे आ जाती है, राइट? So Sir. this is the context. Abhishek and Kisra, why I'm investing so much time? I have a lot of material to deliver my lecture. मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में आई डिलीवर्ड, मैंने लेक्चर को ऐसे डिलीवर किया जैसे क्लास में हम डिलीवर करते हैं, एंड आई कैन डू इट, देयर इज नो इशू। बट आई थॉट व्हेन देयर वन और टू स्टूडेंट्स एंड दे आर कमिंग रेगुलरली टू माय क्लास, आई मस्ट मेक देम फीलिंग कि उनको थोड़ा लगना चाहिए कि कोई लाइव क्लास चल रही है। अदरवाइज इन चीज़ों को समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं, देयर इज नो इशू। बट पॉइंट इज दैट अगर आपको फील होता है कि हमने कोई क्लास अटेंड की थी, उस क्लास को ऐसा लगता है क्लास को सुन के कि हाँ एक लाइव क्लास चल रही है, एंड व्हेन यू वॉच ए वीडियो, आप वीडियो को पॉज करके उसको बार बार सुन तो सकते हो, बट वीडियो को पॉज करके आप टीचर को ये नहीं बोल सकते सर प्लीज रिपीट और Yes, sir. explain. So that's why I'm investing time. इसलिए मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। Otherwise, it is quite easy for me. मैंने कुछ और काउंसलिंग के वीडियोस देखे हैं. So uh, to teach something without having any disturbance, it is quite easy. बहुत आसान है. Make a PPT and deliver your lecture. This is the most easiest thing in the teaching. बट आई थॉट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मेरा पर्पज है आपका इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, राइट डियर? हाँ, इन द Yes. इवनिंग क्लास, शाम की क्लास में मुझे वही करना पड़ेगा। आई हैव मेड सम पीपीटी एंड आई हैव टू एक्सप्लेन दैम, बिकॉज वो एक अलग से सेक्शन है, वो एक नया सेक्शन है, उसका कम पार्ट हमने पढ़ा है, राइट? तो मैं चाह रहा जल्दी से इस क्लास में ये वाला कवर हो जाए। तो ये जब कवर हो जाएगा तो मैं आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि आफ्टर कवरिंग टुडेज पीपीटी, जो हमने पीपीटी के थ्रू पढ़ा है और अब तक जितनी भी क्लास अटेंड की है, तो आज उसका एक रिकैप था, राइट? सो इफ़ यू हैव अटेंडेड माय क्लास रेगुलरली और आप जो ई ज्ञान कोर्स पे हो सारे पीडीएफ पढ़ते हो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप ये श्योर हो सकते हो व्हेन एग्जाम विल कम यू विल गेन गुड मार्क्स, राइट? तो आपको ये फील हो सकता है कि हाँ, कम से कम हमें ये पता चल गया है कि इसको कैसे पढ़ना है और कैसे करना है, Yes, sir. राइट? हाँ, सो कम ऑन क्विकली, बिकॉज इसके अलावा हमने एक और एक्सरसाइज करनी है इसी क्लास में, because we have less time, and without having any break we can continue because only 25 minutes are left. Yes, you need any break? किसी को break तो नहीं चाहिए? No, sir. We can No, go. sir. हाँ, okay. हाँ, next one. The painting looked real, but the signature was obviously a fraud. Printing detail, but the Signature. signature was obviously a forgery. Yes, good. Next. The company made a The company made a Loss of fraud. over. yes, loss. Right. Next. I could never live in Saudi Arabia because of the heat or Eight. what? Yes, very good. Yes. Next. He passed all of our exam with sorry sir, I can't.
Yes, it is little tricky. Yes, Kisra. No, sir. I Uh, also. there is a word ease. 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 आसानी से. Right. Okay. Hmm. Okay. Yes, sir. So easy, easier, easiest. Ease. 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 Right. We cannot change it. Okay, sir. Next. I don't think. I don't think it is a good idea to go to the beach today. It is too cloudy. Cloudy. Yes. Next. The police are looking into the mysterious Mysterious disappearance. Yes. Good. Next. disappearance of the woman. Don't touch so don't touch that snake. It is extremely poisonous. Poisonous. Why not poisoning? Sir, same. Same. Right? I Yes, I think I think I it think is very sensible thing to wait before you buy this house. sensible. Okay. Next. Who prepared this fish? It is awful and completely tasteless. Tasteless. Yes. Next. I want to prove no, no, sir. Sorry. I want proof of your innocence. Yes. Proof. Very good. Proof. Next. I met my informed institution. Sir, inform? Sorry. इन्फॉर्म का क्या हुआ? Yes, sir. नहीं समझ आ रहा. Here, informer will come. I met my informer. Yes, yes, sir. Right. Next. It is my belief that Believe. Yes. Correct. Next. everyone will tell you that competition is the best way to keep prices down. Yes. Competition. Next. If Facebook is a very useful thing to have when you visit foreign country. Yes. A phrase. Yes. What do you mean by Facebook? Facebook, I think, sir, uh, what is dictionary type something. कभी पढ़ा नहीं ना वर्ड आपने फेसबुक. No, sir. Have you seen any visitor roaming in Delhi? Sorry, sir. Say again. I'm asking कि कभी आपने किसी फॉरेनर को किसी विदेशी को घूमते देखा है कि जब वो किसी नई जगह जाता है Yes, तो yes, उसके हाथ में क्या yes. होता है? Yes, yes, yes. क्या होता है? सर वो हमारी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हैं. वो कैसे कोशिश करता है बताओ. बेटा उसके पास डिक्शनरी नहीं होती है. सर देखते देखते मतलब सुनते सुनते. नहीं उसको फेसबुक बोलते हैं. राइट. ओके सर. हाँ. यस सर. मुझे भी नहीं पता था. एक्चुअली आई हैव फोन ऑफ मुझे थोड़ा शौक है ट्रैवलिंग का कुछ ज़्यादा ही. सो वंस आई वेंट टू जयपुर. जयपुर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो देन मैंने पहली बार किसी फॉरनर से बुक मांगी. सर प्लीज़ शो मी योर बुक. एंड व्हेन आई सॉ दैट बुक आई सेड ओह इट इज़ नॉट अ डिक्शनरी. देन ही सेड हु इज गोइंग टू रीड द डिक्शनरी. I know English very well, right? Then I thought that I come across that.
कि जब भी हम किसी से बात करना चाहते हैं तो एक खास कॉन्टेक्स्ट में कुछ पूछने के लिए क्या वर्ड में यूज करना है, राइट? Sir, so foreigner always used to carry these Facebook Facebook devices. सॉरी, सर दे वो हर जगह वो लेके जाते हैं। नहीं आजकल नहीं लेके जाते हैं, हाँ तो फोन आ गया है, फोन इज हैविंग एवरीथिंग, राइट? मैंने आपको क्या कहा, व्हेन, हाँ ओके आई मिस दैट वर्ड, व्हेन आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, आई डिड माय ग्रेजुएशन 2005, राइट? सो देखो कितना टाइम हो गया है, 18 ईयर्स, 18 साल में बहुत कुछ बदल गया डियर। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना शाम वाली, सो दैट क्लास इज हैविंग सम हिस्ट्री, सम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वो क्लास, बिकॉज व्हेन आई वाज मेकिंग पीपीटी एंड आई वाज रीडिंग द पीडीएफ, तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको शाम की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको उसमें एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, तो वो सुनना है आपको, अच्छा लगेगा। तो उसमें भी एक ऐसा ही वर्ड है कि टाइम के साथ कैसे कम्युनिकेशन में चेंज आया है, बहुत बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है, राइट? सो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो अब दे डोंट नीड फॉर दैट, अब तो गूगल ट्रांसलेटर है, अब तो लोगों को भी बहुत इंग्लिश आ गई है, अब तो जो दुकान वाले हैं वो भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आप कभी बनारस जाओ तो बनारस में आपको सांप बेचने वाले, सॉरी वो सांप का खेल दिखाने वाले, वो भी इंग्लिश बोलते मिल जाएंगे आपको, देयर इज नो इशू, वो बात नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फ्रेज बुक, कि फ्रेज बुक क्या होती है कि किसी खास कॉन्टेक्स्ट में क्या फ्रेज यूज करना है। जैसे हम कहते हैं कैन यू हेल्प मी, राइट? कैन यू हेल्प मी, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या फ्रेज यूज करना है वो लिखा रहता है उसमें, राइट? उनकी Yes, लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज के बारे में जो लिखा रहता है वो फ्रेज बुक है डियर, राइट? एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, डू यू नो पंजाबी, आप किसी को पंजाबी आती है? no sir. ओके, आपने गाना सुना है बूहे बारियां? नो सर। नहीं सुना है? Yes sir. हाँ, एक है ना गाना है बूहे बारियां, मैंने क्यों किया, क्यों बताया, क्योंकि व्हेन आई वाज कॉलेज स्टूडेंट तो ये गाना बड़ा चलता था, बूहे बारियां, बड़ा अच्छा गाना है, गूगल पे सर्च करना मेरी क्लास ओवर होने के बाद, बूहे बारियां, BUHE, नहीं BUHE BARIAN, बूहे बारियां। सो दैट बूहे बारियां मीन्स डोर्स एंड विंडोज, राइट? डोर्स एंड विंडोज तो होता है यस दरवाजे और खिड़कियां। अब इफ आई गो टू पंजाब और मैं कहूँ डोर, ए लोकल पीपल वोंट अंडरस्टैंड द वर्ड डोर, एंड विंडो, विंडो भी नहीं पहचानेगा। अगर मैं कहूँ दरवाजे और खिड़की, वो भी नहीं समझेगा। तो मुझे उसकी भाषा नहीं आती है, उसको मेरी नहीं आती है, तो मैं क्या करूँगा, इफ आई हैव ए फ्रेज बुक जिसमें लिखा है कि विंडो मीन्स, विंडो का मीनिंग है बारी, और बारी लिखा हुआ है हिंदी में BARI, बारी, आप समझ गए मेरी बात? मीन्स विंडो को पंजाबी में कैसे बोलना है वो मेरी भाषा में लिखा हुआ है, गॉट इट? Yes sir. समझे आप? तो मैं सामने वाले कहता हूँ भाई दरवाजा, विंडो को खोल दो, मैं बस में हूँ और मैं कह रहा हूँ खिड़की खोल दो, राइट? और मैं कहूँ बारी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन द बारी, बारी खोल दो, मैं इशारा कर रहा हूँ बारी, तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि खिड़की खोल दो, यस सर। समझे? सो अगर लिखा रहता है कि, अगर ये लिखा रहता है कि ओपन द विंडो, तो ऐसी कितनी बड़ी बुक लेके घूमेंगे हम। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि बस में ट्रेवल करना है तो दरवाजा खुलवाना पड़ता है और बंद करवाना पड़ता है, जिसको विंडो बोलते हैं, राइट? अब जो वो विंडो है उसको पंजाबी में बारी बोलते हैं, राइट? सो हम क्या करेंगे, इशारा करेंगे बारी, तो सामने वालों को तुरंत समझ आएगा कि ये बारी के बारे में बात कर रहा है, बाकी वो खुद कर लेगा कि खोलनी है कि बंद करनी है,
तो इसको पता चल गया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, विंडो के बारे में। तो बेटा फेसबुक इस नाम की चीज होती है ना, इंटरेस्टिंग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। सो और आपकी बात सही है, वो अब आजकल ये लेके नहीं घूमते, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि फेसबुक आया है तो कहाँ से आया है। एक कहावत है बेटा, लिव इन प्रेजेंट बट मस्ट नो द हिस्ट्री, राइट, एंड ऑलवेज टॉक Yes, अबाउट sir. फ्यूचर। कि हमेशा प्रेजेंट में जियो, लेकिन पास्ट का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? ताकि आप फ्यूचर बना सकें। सही बात है ना। नेक्स्ट, ही डेफिनेटली हैज डैश Ability. एबिलिटी। गुड। नेक्स्ट, The part of the country is made up to a landscape of great beauty. ब्यूटी और ब्यूटीफुलनेस। Beauty. ओके, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एक्चुअली, ग्रामर इज ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग। और जो चीज़ हमें 6 महीने में पढ़ानी चाहिए वो हमें 6 क्लास में पढ़ानी पड़ती है। बट आई विल टेक 2 मिनट्स हियर। हियर आपने दो स्टूडेंट, दो सेंटेंस देखे, 22 और 23। अब आपने फर्स्ट में बताया एबिलिटी, राइट, और सेकंड में बताया ब्यूटी। सही कह रहा हूँ? Yes, Yes. sir. डोंट यू थिंक कि हम इसको उल्टा कर सकते हैं कि है ही डेफिनेटली हैज द एबलनेस एंड द पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज मेड ऑफ द ग्रेट ब्यूटीफुलनेस, राइट। लेकिन हमने क्या यूज किया, एबिलिटी एंड ब्यूटी। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट में एबिलिटी आएगा, सेकंड में ब्यूटीफुलनेस आएगा। अब डिफरेंस बता सकते हो जल्दी से, देन वी विल मूव अहेड। सर यहाँ पे ग्रेट यूज हो रहा है तो ब्यूटीफुलनेस। Again, I want to tell you, try to understand. When we say he definitely has the ability to become a professional tennis player. Ability in a particular sport, एक खास स्पोर्ट में जो योग्यता चाहिए उसको एबिलिटी बोला गया है, राइट। एबलनेस मीन्स किसी भी काम की योग्यता, किसी भी काम करने के योग्य होना, एबलनेस। बट वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टेनिस की, तो एबिलिटी आ गया। इन द सेम वे, दिस पार्ट ऑफ कंट्री इज मेड ऑफ लैंडस्केप ऑफ ग्रेट ब्यूटी। इफ वी से ब्यूटी, अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटी इज टेम्परेरी बट ब्यूटीफुलनेस इज एटर्नल, राइट। इसलिए इसमें Yes. ब्यूटीफुलनेस आएगी, राइट। Yes, sir. जब Yes. हम कहते हैं ना ब्यूटीफुलनेस, तो इट इज एटर्नल। नेक्स्ट, कहते हैं ना ब्यूटी लाइज इन द आईज, नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट, आई कैन फिनिश दिस बुक, आई डाई ऑफ, बताओ, इधर बोरिंग और बोर्डम। Border. बोर्डम, व्हाई नॉट बोरिंग? No, sir, because it is अनएप्रोप्रिएट, बोरिंग आ ही नहीं सकता है, राइट। बोर्डम, yes, sir. बोरियत। नेक्स्ट, The department of the plane was delayed because of fog around the airport. द Department? डिपार्चर, Departure. Departure. राइट, Sorry, sir. डिपार्चर, यस। नेक्स्ट, ओके, अगेन वन मोमेंट, यू सेड द वर्ड डिपार्चर। यहाँ पे डिपार्चर यूज किया गया है, व्हाई वी डिडंट यूज, वी कुडंट यूज टेक ऑफ?
जब प्लेन उड़ता है तो हम टेक ऑफ बोलते हैं ना। Yes, sir. हाँ, तो टेक ऑफ क्यों नहीं यूज किया, डिपार्ट क्यों यूज किया, डिपार्चर क्यों यूज किया? सर क्योंकि वो अभी निकला ही नहीं है एयरपोर्ट से। नहीं डियर, द पॉइंट again is that take off is just a position, right? How plane is departed. Departure का मतलब होता है डियर, all the formalities related to uh, you know taking off, राइट? जब पैसेंजर्स को बोला जाता है कि वियर योर सीट बेल्ट्स, राइट, पुट योर मोबाइल फोन, वो जो सारी स्विच ऑफ, वो जो सारी चीजें हैं, दैट इज पार्ट ऑफ डिपार्चर। टेक ऑफ का मतलब तो क्या है कि प्लेन रनवे पे दौड़ता है और एक पोजीशन आती है कि उसके बाद वो एयर में चला जाता है, हवा में चला जाता है, रनवे छोड़ देता है, तो दैट पर्टिकुलर मीन्स टेक ऑफ। But departure means all the formalities regarding the departure of plane. Have you ever done any travel like this? कभी plane में गए हो क्या? नो सर। कोई बात नहीं, there is no issue. Just 2 years back, मैं भी just 2 साल पहले ही पहली बार plane में बैठा, कोई बड़ी बात नहीं. It takes time. Then I came across कि एयरपोर्ट पे 2 घंटे क्यों लगते हैं? मैंने भी सोचा यार 2 घंटे क्यों लगते हैं वहाँ पे? Due to the formalities of departure, right here. So next, यस। next. He was filled with अनवियसनेस। enviousness. Yes, enviousness means jealousy, right? Next, यस। अपीयरेंस, यू शुड केयर अबाउट योर अपीयरेंस। appearance. Yes. Next, There is no comparison between his latest book and the earliest ones. yes. Abhishek, Earlier one. Yes. we had to get special. Permission to leave. Permission. Yes. Can we say permit? Uh, Abhishek and Kisra, here we can use the permit itself also. हम यहाँ पे permit भी use कर सकते हैं. okay, Because sir. because permit itself means a document that is having permission for something, उसको permit बोलते हैं. आपने सुना बस का permit, ट्रक का permit, कार का permit? Yes, sir. हाँ. Next, ऐसे एक वर्ड है डियर, select and selected. आपको पता है हम select और selected दोनों ही यूज कर सकते हैं. अब दोनों का मीनिंग सेम है, राइट? Select Yes. and selected. Next one, last one I As the think. As the best man, he had to make a okay, speech at the wedding. speech at the time, right? So this was an exercise. Now let me go to the PDF, because after ending this class and before starting our next class by 4, meanwhile you have 4 hours. इन 4 घंटों में आप एक काम कर सकते हैं, if you want to devote your time, and what you are supposed to do. कैन यू सी दिस पीडीएफ? अभी जो पीडीएफ मैंने ओपन की इसको देख सकते हो आप? No, No, sir. ओके, जस्ट Sir, your screen is not visible. जस्ट नाउ कैन यू सी? yes, sir. Yes. ओके,
Well, this is the first PDF or first block of our this paper that is titled as English Communication Skills. ये हमने आज शुरू किया है। इसकी हम आगे क्लासेस करने वाले हैं जैसे आज एंड द इवनिंग क्लास इन द सेम वे 23 जुलाई को हमारी मॉर्निंग और इवनिंग क्लास और 30 जुलाई को हमारी मॉर्निंग और इवनिंग क्लास। तो ये 6 क्लास इस पेपर को लेके है। इट्स टाइटल इज इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। एंड इसकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, राइट। इसमें 3 पार्ट है डियर। the process of communication, the globalization of communication, the global village, and verbal and non-verbal communication. राइट। सो अगर आपने पहली क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको याद होगा द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। Yes, sir. हाँ, सो इनका जो पार्ट हमने नहीं किया था या जो पार्ट हमने वी डिड इन अ डिफरेंट वे, और ये आपकी जो सिलेबस है जो आपकी जो नोट्स हैं इसमें कैसे दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमने आज वो पढ़ा। सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो पार्ट इसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमने किया, और इवनिंग क्लास में हम ये करने वाले हैं दिस द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी हम बात करेंगे। और वर्बल और नॉन वर्बल का जो पार्ट हमने अभी कवर नहीं किया है, आई विल नॉट रिपीट एनीथिंग, आपको मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको बोर नहीं करेंगे। जो पार्ट हमने कवर नहीं किया है बट आपको सिलेबस में वो हम करने वाले हैं। सो द इवनिंग क्लास इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल कवर अवर सेकेंड एंड थर्ड यूनिट एज वेल, राइट। सो लास्ट में हम ज़्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, राइट। सो हाउ यू विल रीड दैट, जल्दी से हैव ए लुक, वी हैव जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट। व्हेन आई एम स्क्रॉलिंग आप देख पा रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, यही हमने किया, राइट। आफ्टर दैट, राइट। सो व्हेन यू सी, जब भी आप ये पीडीएफ पढ़ोगे यहाँ पे लिखा रहेगा चेक योर प्रोग्रेस। तो आज मैं चाहूँगा व्हेन वी विल मीट बाय 4, जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उससे पहले आप ये 58 पेज की पीडीएफ है, इसका लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये आप जरूर पढ़ के, नहीं तो एक बार यू मस्ट गो थ्रू, इसके बाद गो थ्रू होके आए आप। कम से कम जो हमने आज कवर किया है ना, मैं बता देता हूँ किस पेज तक हमने कवर किया है, वो आप जरूर एक बार देख के आए, राइट। सो चेक योर प्रोग्रेस 2, ये आप जरूर पढ़ना। अगर आप सारा नहीं पढ़ पा रहे तो जहाँ लिखा हो ना चेक योर प्रोग्रेस, वो जरूर पढ़ना है। ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यस जस्ट चेक योर प्रोग्रेस 6, ये करके देखना है। नेक्स्ट इज, see you can see I have skipped a lot of things, मैंने काफी कुछ स्किप किया है बिकॉज वो हम पहले कर चुके हैं। यस चेक योर प्रोग्रेस 7, ये आपने करके देखना है। यस प्रोग्रेस 8, ये 8 आप कैसे कर पाओगे व्हेन आप ये ए और बी, ये द कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल जब आप ये पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्सेशन जब आप ये पढ़ोगे, द होल पैराग्राफ, दिस इज पेज नंबर 16, when you will read the page number 16 then you will be able to do the exercise given on page number 70. So try to do that. And yes, and adjacency pairs, read that and then do the exercise, take your progress 9 and 10. After that, mm, yes, then read this.
paragraph. Let us sum up. You must read that, right? Then you will come across कि हमने क्या सीखा है इसमें. This is up to page number 22. So you are supposed to study up to at this page number 22, and all the answers are given here. So answers are there, right? But try to do that. एक बार करने की कोशिश कर. Then you will go for the answers, Yes, sir. right? And yes, from here we will start in the evening class. For evening class, we will start from the page number 26, right? So you are required to read at least 20 pages, only 20 pages, right? Up to page number 20. Yes, sir. It's only 20 pages, and yes, some more. It's 22, only 22 pages. You can go through, and not all 22, just 7 to 8 pages that I told. Right? So, in the evening class, before starting, you can ask me any question related to that particular section. Otherwise, we will continue with that on, and we will finish it by today. Okay, students. Okay, sir. So, Thank you, sir. okay. Any other doubt? No, sir. Okay. Yes, sir. See you in the evening. Then. Bye. Thank you, sir. Bye. Yes, Soil sir, can you believe?